to proceed for the candle light. It's a small ceremony, but to pay homage to our leader, Dr. B.R. Ambedkar. Thank you so much. मनसुखदेव जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एम की तरफ से मंच पे आ जाएं साथ। जालंधर में एक एनआरआई समिट हो रहा है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और के.जी. बालाकृष्णन जो है वो यहाँ आए हुए हैं, उनका एक लेक्चर होने वाला है। भारत के इकलौते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए जो दलित समाज से थे। ये देखिए सर, गवर्नमेंट सर प्लीज सर जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन आए हुए हैं, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और के.पी. सिंह हैं, प्रोफेसर साहब हैं। और जालंधर में एनआरआई समिट हो रहा है। हॉल लगभग भर गया। आज तीसरा दिन है, लास्ट सेशन है। और एनआरआई बहुजन समाज के जो एनआरआई हैं उनका एक समिट हो रहा है। बालाकृष्णन साहब की तस्वीरें दिखा रहा हूँ और लाइव स्पीचेस दिखाऊंगा आप लोगों को। उनकी भाषण शुरू होने वाली है, तो ये देखिए। और कैंडल सेरेमनी करते हुए हमारे चीफ गेस्ट इस कॉन्फ्रेंस के श्री के.जी. बालाकृष्णन जी और उनके साथ हैं बताइए आप लाइव है, पूरा देश देख रहा है आपको। और के.पी. सिंह जी और लाहौरी राज वाली जी और अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी, एएस कनाडा की पूरी टीम, हरजिंदर पाल जी, सचिन पाल जी, और के.पी. चौधरी साहब, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो सभी को बधाई देते, तो बहुत बढ़िया फंक्शन हो रहा है और ऐसे फंक्शन और भी करेंगे। ये पहला है, ये स्टार्टअप है। देखिए ये तस्वीरें हैं, हॉल लगभग पूरी भरी हुई है और बालाकृष्णन जी का होने वाला है। जो इकट्ठा हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है, जो पंजाब में पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें इतनी महान हस्तियां जो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं, हम उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि वो उन्होंने अपने बहुत ही जो कीमती समय है उसमें से समय निकालकर जो हमारे पंजाब की धरती पर आज चार लगाए हैं। एक बार सभी के जो सभी बाहर से डेलीगेट्स भी आए हैं, उनके सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां लगा दीजिए प्लीज। और सबका हम धन्यवाद करते हैं जो भी आए हैं, क्योंकि इस मंच से हम सबके नाम तो शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सभी का हम धन्यवाद जरूर कर सकते हैं इस मंच से। जो भी बाहर से आए हैं और जो फॉरम से भी एनआरआई से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। Thank you so much for your patience. ये कैंडल सेरेमनी आज नया चीज हमने की है और थैंक यू सर for giving your time to this conference, his views on this conference. Thank you so very much, Mr. Thank you. बहुत ही रिस्पेक्टेड साडे फॉर्मर चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन
ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਉਹ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ MLA ਬਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਪੜਚੋਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 89% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ PhD ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Jasmine. Thank you so much. Your valuable time. Mr. Jayavedi is there? Okay. May I request Mr. Jayavedi to speak his views for the conference. I would like to make a small request to him, since we are running short of time, and Justice K.G.Balakrishnan has to leave and catch the flight back to Delhi. So I request Mr. Jayavedi to take minimal time. Thank you so much. Details. I just have some questions in my mind which I want to bring forward to the conference. First of all, I'm really glad that this conference is happening. This is a very timely setting. Elections are happening in 2019. My views are that the Constitution is one element of democracy. There are bigger questions. Democracy needs to be safeguarded, but the bigger question is even democracy is in danger. 4 judges of the Supreme Court last year raised alarm bells. Now we're seeing intellectuals being harassed, being arrested. We look at the pillars of democracy in the form of elections. We hear concerns that the electronic voting machines are being corrupted. Sir, Your Honor, with this kind of environment that we're working in, what safeguards can we rely on? What are some of the measures that we have applied? And is it also a time for us to reconsider separate electorate system? As you know, Baba Sahib, Dr. Ambedkar ji did not really want this kind of electoral system. He wanted a separate electoral system. We hear about reservation system, we hear about the threats, and I'm beginning to ask the question and wonder that is it time to take another look at? Because unless we take another look at the electoral reforms, any of our efforts at lobbying, protecting the Constitution,
holding education such as Bharat may not be as successful. So, Your Honor, without further ado, one other thing I wanted to say is I also want to welcome my friend Dr. K.P. Singh. Seeing him here today reminds me of the time when we planned the sport of Parm and Harjinder and Chanchapan, the Dalit conference in Vancouver. It was the first international Dalit conference under the chairmanship of Brother Dr. K.P. Singh, where we challenged the multinational corporations and the governments to take another look at providing reservation and affirmative action programs in the private sector. And I was really pleased to hear that it's, at least since 2007, Mayawati has been openly advocating for the affirmative action even in the private sector. So these are good. I'm pleased that the work that was done in Vancouver is bearing fruit, and I'm also very pleased and hopeful that the seeds that are being planted here today in this conference will bring even better fruit and will re-strengthen the democracy that Baba Saheb Ambedkar had envisioned. So without further ado, I wanted to just say thank you to the organizers for giving me the opportunity to be here and to take in this all energy. Thank you, and Jai Bhim, everyone. Thank you so much for sticking to the time limitation. Thank you so much, Mr. Jayabirde. And now I'm going to call Justice K.G.Balakrishnan, former Chief Justice of India, Government of India. Before that, I would like to introduce him, and I would like to also tell you that he is going to speak in English. I think most of the people sitting here, they are well educated, they can understand English very well. Normally, they also speak English very well. Since he belongs to Kerala, so his command over Hindi or Punjabi is little bit different. Punjabi is too far, but Hindi is also like that. I would like to introduce Justice K.G.Balakrishnan ji. Before that, he was chairperson of the Human Rights Commission of India. He holds many important positions in the Government of India, in the judiciary also. He has a lot of expertise on the constitutional matters, and there are a lot of cases. One of the cases that, if I'm not wrong, Justice Sahib, and it was in regard to Lalu Yadav and Rabri Devi. He was one of the judges in 3 bench judges when NDA government filed a cancellation plea for that. He was there in the judge also. And since I live in Delhi, so जब मैं KP चौधरी जी के साथ इनके घर इनको इनवाइट करने गया केस की तरफ से, एम की तरफ से, तो KP चौधरी जी मुझे अपनी गाड़ी में ले गए. तो जब हम घर इनके पहुंचे तो मुझे नहीं लगा कि इन जैसा डाउन टू अर्थ हम्बल मैन इस दुनिया में कोई होगा. हमें इन्होंने अपने गेट पे रिसीव किया, चाय का कप बुलाया, और ये फर्स्ट और सेकंड को इम्फाल में थे. 2 तारीख को ये दिल्ली में इम्फाल से पहुंचे हैं और 3 तारीख को हमारे बीच में यहाँ आए हैं. हम इनका स्वागत करते हैं. एंड आई वेलकम नाउ जस्टिस K.G.Balakrishnan, former Chief Justice for India, Government of India. I think there is a little change in that. Earlier I was told that he has to take a flight. Now some amendment is there. So I welcome Mr. K.P. Singh. I request him, since he has to catch a flight, I request him to stick to the time limitation. Thank you so much. Mr. K.P. Singh. I think we should introduce each other. Justice K.G.Balakrishnan was born in Kerala. He was selected as magistrate and he resigned from there. And he started practice there and he was elevated as High Court Justice. He was Chief Justice of Gujarat for a long time and he was holding the additional charge of Gujarat 2 times also. From Gujarat High Court Chief Justice, he was elevated as the Supreme Court Judge for 4 years. And for 3.5 years, he has served the nation as the Chief Justice of India, the longest period in the history of Supreme Court. After his retirement,
Supreme Court Chief Justice of India. He was appointed as Chairman National Human Rights Commission NHRC. And there was some consideration of the President of India also, but last moment government has changed. And we are hoping that in coming days, our former Chief Justice will lead our committee, and he is attending all over the country. Whatever the programs we are giving for him, he always tries to attend all the programs. Now we are introducing Justice Dr. K.P. Singh. Dr. K.P. Singh belongs to Hapur, Uttar Pradesh. He has his graduation from Jawaharlal University and gone to USA for PhD. He was served in the Seattle and in Washington University as a professor. At the order of our Mehndi, he resigned from there and he came back to India and he joined as a dean of Lord Buddha University of this Greater Noida. For 5 years he has served as the dean of Gautam Buddha University in Greater Noida. But after the government changed, the Akhilesh Yadav has changed the assignment now. He is with us and he is attending all the programs all over the country. Please, great big hands to our Dr. K.P. Singh and Justice K.G.Balakrishnan. थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं मंच पर बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बालाकृष्णन साहब हमारे दिलों पे राज करने वाले और तमाम करोड़ों लोगों के चहेते, भारत की संसद से लेके कनाडा की संसद तक और यूनाइटेड नेशन से लेके इंग्लैंड तक सब जगह हम पूरे समाज की बात रखने वाले भाई के.पी. चौधरी साहब, हमारे वैंकूवर से आए भाई जय बड्डी साहब, परमजीत कैंथ साहब, हमारे अमेरिका से आए चंद्रपाल साहब, साहे साहब, बहनी चंचल जी और हरिंदर साहब गोल्डन कनाडा से आए हुए और तमाम साथियों, मैं अगर किसी का गलती से नाम लेना भूल गया तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना दिल में जगा लो यारो, सरफरोशी की तमन्ना दिल में जगा लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए इसको संभालो यारो। आज आप सब लोगों का यहाँ सभागार में इकट्ठा होना एक बात का तो सबूत देता है कि जरूर इस समाज पर कोई परेशानी का सबब बना है, जरूर कहीं ना कहीं आपको इस समाज के बारे में दुखन है, जरूर आपका दिमाग कहीं ना कहीं जब रात को आप सोते तो परेशानी से बौखला उठता है, विचल उठता है। आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में वो परेशानी, वो बेचैनी, वो खौफ है जो हमारा समाज पूरे भारत के अंदर महसूस कर रहा है। आज आप इस बात को महसूस करते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आना चाहिए। आप इस बात को, आपकी प्रेजेंस इस बात को महसूस कराती है कि आज पिछले तकरीबन 12 साल से 13 साल से संविधान को बदलने का जो असफल प्रयास किया जा रहा है, आज वो कहीं कामयाब होते नजर आ रहे हैं। आज जब अगड़ों को आरक्षण देने की बात होती है तो 2 दिन के अंदर संविधान बदल दिया जाता है और 2 दिन को संविधान बदलने के बाद आरक्षण को लागू कर दिया जाता है और लागू नहीं किया जाता, तमाम सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडवर्टीजमेंट निकल जाते हैं और उनकी पोजीशन अनाउंस हो जाती हैं। दूसरी तरफ 70 साल पहले जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था उसको खत्म करने का काम कर दिया जाता है और कहीं पर तमाम सीटों को खत्म कर दिया जाता है। आज आपने सुना हुआ 13 पॉइंट रोस्टर का जो आज तबाही मचा रखी है, उसने 13 पॉइंट रोस्टर आज लागू हो गया है तमाम यूनिवर्सिटीज में। सबसे पहले उन्होंने हमारे नीचे से शिक्षा को खींचा, शिक्षा को खींचने के बाद फिर कुछ किसी वजह से मेहनत मशक्कत करके कुछ नौकरियों में हम लोग आ गए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तक पहुंच गए, तो वहां पर नौकरियों को भी हमारे हाथ से खींच लिया और दूसरी तरफ अपने लोगों को 10% को एक्स्ट्रा आरक्षण देकर के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बैठा दिया। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आप तमाम लोग कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड से आए और तमाम पंजाब से लोग इकट्ठे जो हुए हैं, कम से कम आपके दिल में वो दर्द है।
तो आप अपना सहयोग, अपना ताउन, अपनी अपनी संवेदना उन लोगों के साथ व्यक्त करने आए हैं जो आज किसी न किसी तरीके से अपने आप को घायल और असहाय महसूस कर रहे हैं। आज आप देखिए बाबा साहब इस चीज को बहुत पहले भाग गए थे। बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो सबका बच्चा होता है। आज इस सभागार के अंदर, इस ऑडिटोरियम के अंदर का छोटा सा सांप बच्चा आ जाए और जरा से में कोई ये कह दे कि सांप का बच्चा है, पूरे सारे के सारे ऑडियंस इसके भाग मिलेंगे। सांप के बच्चे का एक ही उसकी खास बात है कि वो डसता है, और जब डसता है, डंक मारता है, तो उसका डंक मारा हुआ आदमी बचता नहीं है। हमारे समाज में एक समाज ऐसा है कि ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी लोगों ने उसके दिमाग पर डंक मार दिया है और उसको पैरालाइज कर दिया है। बाबा साहब ने जब इस बात को देखा था कि राम नाम की घुट्टी जब ला दी गई है और हम लोगों को सदियों से सताया जा रहा है, तो बाबा साहब ने उस चीज को अपने तरीके से, किस तरीके से अपने संविधान लिख के उस घुट्टी को उतारने का, उस जहर को उतारने का काम किया। आज तमाम लोगों से मेरी गुजारिश ये है, राम नाम का जहर ये समाज पिए जा रहा है, जो राम नाम के नाम पर अंधभक्त हुआ जा रहा है, उसको रोकिए और उसको संविधान नाम की घुट्टी पिलाइए, उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाम की घुट्टी पिलाइए। आप देखेंगे कि वो जहर उतर जाएगा और जहर उतरने के बाद वो अपने अधिकार के लिए खड़ा हो जाएगा और उस खुमारी से निकल के बेचैन होकर के बाहर आएगा, जैसे आप आए बैठे हैं। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि आप सब लोग, मैं हमेशा भाई जयवर्धन जी ने कहा कि वैंकूवर की कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया 2003 में, हम सब लोग बैठे थे गुरुद्वारा साहिब में, डिसाइड हुआ कि हमें कुछ अपने समाज के लिए करना चाहिए। जयवर्धन साहब, कैंट साहब, पिंद्रपाल साहब, राय साहब, सब लोग, सारे लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद हम लोग चले गए सब तमाम। हमने एक अवेकनिंग कैंपेन चलाया पूरे नॉर्थ अमेरिका से लेके और यूके तक। हम जब यूके में पहुंचे तो स्मृति साहब, आपको याद होगा कि हम लोग शाम को पहुंचते वाल्मीकि मंदिर में पहुंच गए। जब हम वाल्मीकि मंदिर पहुंचे तो देखा हमने क्या नजारा वहां पर साउथ हॉल के अंदर, कि ऊपर मंदिर है और नीचे शराब का ठेका। हमने पूछा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, ज्यादातर लोग जो हैं ऊपर मत्था टेकिए राम जी को, रामायण को, और नीचे आके दारू पिए अपने घर चले जाइए। हमने कहा वो नीचे वाला तो सिस्टम ठीक है, लेकिन ऊपर जो ये बैठा रखा है आपने भगवान जी को, राम जी को, इसकी खुमारी कब उतरेगी आपसे? इससे बाहर निकलो। भारत के संविधान को पढ़ो रामायण की बजाय। आज मैं आपके सामने आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक इस रामायण को पढ़ना आप नहीं छोड़ोगे, जब तक इस राम की खुमारी से, जहर से आप नहीं निकलोगे, जब तक संविधान को नहीं पढ़ोगे, आप अपने बलबूते पे खड़े नहीं हो सकते। मैं आपके सामने आज चैलेंज करता हूं इस बात का कि हिंदू धर्म के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज बताइए जहां पर आपके अधिकार की बात की गई हो। हिंदू धर्म के अंदर कोई भी ऐसा ग्रंथ बताइए, कोई भी ऐसा महापुरुष हिंदू धर्म के अंदर बताइए जिसने आपके अधिकारों की बात की हो। बाबा साहब इस बात को बहुत पहले समझ गए थे और समझने के बाद उन्होंने संविधान के अंदर आपको अधिकार दिए थे। बाबा साहब ने संविधान की जो क्लॉज है 16.4, उसके अंदर दो बातें मैंने लिखी थी। बाबा साहब ने लिखा था कि जो लोग सामाजिक तौर से पिछड़े हैं, जो लोग सामाजिक तौर से पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिलेगा, और जो लोग जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है उनको नहीं मिलेगा। और आज क्या हो रहा है? आज जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, जो सामाजिक तौर से पिछड़े भी नहीं है, उनको आरक्षण इस सरकार ने दे दिया और सरकारी गद्दियों पर बैठाने का इंतजाम भी कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जरा मुझे दिल खोल के बताइए कि कोई एक पंडित ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होता है, चाहे उसके कपड़े फटे हों, चाहे कुछ भी पढ़ा हो, वो भी आपको आशीर्वाद देकर जाता है, जीते रहो, पढ़े रहो, ये करो, वो करो, आप नाम भी रखवाने जाते हो। क्या उसका सामाजिक तौर पर उसका स्टेटस लो है? नहीं है। उस चाहे आप कनाडा हो आइए, चाहे आप इंग्लैंड हो आइए, चाहे अमेरिका हो आइए, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हो आइए, कोई सी भी डिग्री हासिल कर जाइए, लेकिन अनपढ़ पंडित का लड़का भी आपके ऊपर ही बैठेगा, हमेशा वो आपके ऊपर रहेगा। तो सामाजिक तौर से वो नीचे कैसे हो गया? मेरी बात के समझ में नहीं आती। आज ये लोग कहते हैं कि आर्थिक तौर पर आरक्षण लगा दो। अरे हमारे साथ सदियों से इतना जुल्म हुआ है, आज को 50 साल के अंदर आपके पेट में दर्द हो गया? अरे 5000 साल से आपने हमारे सीने पर बैठकर हमारे जख्मों को हरा किया, हमें कभी ठीक नहीं होने दिया, हमें कभी उस मानसिकता से निकलने नहीं दिया। बाबा साहब ने 70 साल में संविधान लगाया और संविधान के चलते आज जो थोड़ी चेतना हमारे अंदर आई, आज से आपको परेशानी होने लगी। ये परेशानी हम लोग आपके दिल में जो दुखी है, जो परेशानी है, उसको हम हर तरीके से भागते हैं, जानते हैं हम, और हम आपको कामयाब, इन तमाम ब्राह्मणवादी फोर्सेस को कामयाब होने नहीं देंगे। याद रखिए कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आखिर में अपनी बात एक और खत्म करके जाऊंगा कि मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप कामयाब हो, आपके नौनिहाल आजादी के साथ सुरक्षित रहें, आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो आने वाली जनरेशन है वो सम्मान के साथ जिए, तो 2-3 काम आप शुरू कर दीजिए। एक तो संविधान पढ़ना शुरू कीजिए, दूसरा ये कि अपने बच्चों को आप सरकारी नौकरियां बहुत अच्छी लेकिन बहुत कम है, कितनी नौकरियों में आरक्षण खत्म हो गया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं विधि साहब से, इंद्रपाल साहब सामने बैठे, कि अगर आप सब कुछ कर सकते हो तो मेरे इस पूरे समाज को, जो भारत में मेरा गरीब समाज है, इसको पैसे से मोहब्बत करना सिखा दो। जिस दिन ये पैसे से मोहब्बत करना सीख गया, ये छोटे मोटे को रोजगार कर लेगा, अपने घर में पैसा लेकर के आएगा, अपने घर में खुशियां लेकर के आएगा। आप सब लोग सरकारी नौकरियों को छोड़िए, सरकारी नौकरियों के ऊपर मत डिपेंड रहिए, सरकार के ऊपर मत डिपेंड रहिए। सरकार आपका भला करने वाली नहीं है, आपको भला करना तो खुद करना पड़ेगा। और आप सब लोग जो भी बिजनेस में है, आप बोलिए, बिजनेस के अंदर आप रोज अखबार पढ़ते हैं। मैं अपने समाज की वेदना कह सकता हूं आपसे कि जब अखबार आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं फ्रंट पेज, किसने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, किसने क्या कहा। लेकिन जैसे ही वो बिजनेस का पेज आता है, उसको इतनी जोर से फेंक के पलट के मारते हैं उससे कोई आपका बचता ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा घोटाला उस बिजनेस पेज के अंदर ही होता है। आप राजनीतिक खबर पढ़ना छोड़िए, उस बिजनेस पेज को पढ़ने की पहले आदत डालिए। आप देखिए संभ्रांत लोग जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, वो राजनीतिक खबर बाद में पढ़ते, पहले बिजनेस पेज पढ़ते कि आज मंडी में गुड़ का भाव क्या है, आज गेहूं का भाव क्या है, आज गन्ने का भाव क्या है, आज चीनी का, शक्कर का भाव क्या है। जब आपको सब देखने की आदत पड़ जाएगी तो आपको पता लगेगा मार्केट में हो क्या रहा है, घपलेबाजी कहां हो रही है, कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? आपके अंदर चेतना जागेगी। आप तमाम सब लोगों को बताइए कि आप सब लोग अखबार के अंदर बिजनेस पेज, व्यापार पेज पढ़ना शुरू करें, अपने लोगों को बिजनेस में धकेले, अपने लोगों को छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक आप उसमें लेके आइए। मैं अपनी बात ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात में विराम देता हूं क्योंकि हमें जाना भी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और 15 साल के बाद वृद्धि साहब ने कहा, आज मुलाकात जो वृद्धि साहब से हुई 15 साल के बाद, 15 साल का वनवास खत्म हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो प्राउड टू बी हियर, सो प्रिविलेज कि मैंने आप सबसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। थैंक यू डॉक्टर के.पी. सिंह जी। डॉक्टर के.पी. सिंह मेरी ही यूनिवर्सिटी से हैं, ग्वालियर यूनिवर्सिटी से हैं। आपने उनको बड़े प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा विद परमिशन ऑफ डॉक्टर के.पी. चौधरी। देखिए, हमारी रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि आपकी वोट चाहिए। रिजर्वेशन आपकी खत्म नहीं होगी, वोट चाहिए। रिजर्वेशन खत्म करने के और ढंग उन्होंने ढूंढ लिए हैं। वो क्या है, आप यहाँ बहुत सारे टीचर बैठे हैं। हमारी टीचिंग पोस्ट जो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल से हम ज्वाइन करते हैं, उन्होंने नेट शुरू कर दिया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो नेट अगर आप पास करते हैं तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कैसे बेईमानी हो रही है, जब से नेट कंप्यूटराइज सिस्टम में चला गया तब से SC ST के बच्चों को पास करना क्या, उनका तो नंबर ही नहीं आ रहा। 4-4, 5-5 अटेम्प्ट करते हो गए हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चों को, लेकिन वो नंबर नहीं आ रहा। जब वो पेपर के जैसा था जिसमें पेपर को आप RTI की तरफ से निकाल सकते थे, तब हमारे बच्चे पास होते थे। ऐसे ही एक टेस्ट शुरू किया गया है, ये आपको रोकने के लिए किया गया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें भी हमारे बच्चे पास नहीं हो रहे। तो इन चीजों को थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। रिजर्वेशन तो आपको वो देंगे ना, वो छेड़ सकते हैं क्योंकि 2 अप्रैल वाला उन्होंने नजारा देख लिया है। फिर तो इस देश में बहुत कतलेआम होगा, बहुत कुछ होगा। इसलिए रिजर्वेशन खत्म नहीं होगी, लेकिन अपने बच्चों को इन एग्जाम के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके वो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का गवर्नमेंट जॉब को ले पाएंगे। जहां तक प्राइवेट जॉब की बात लगी, मेरे प्रोफेसर हैं ज्योतिका सिंह, ज्योतिका सर बोलता हूं मैं उनको, उन्होंने हरियाणा के 40 गांव का सर्वे किया है। 40 गांव का सर्वे जो UGC का प्रोजेक्ट था, उसमें उन्होंने पाया है प्राइवेट कॉर्पोरेशन के अंदर जो हमारे जॉब
अवेलेबिलिटी है उसको कोई नहीं दे रहा है। उसमें जहाँ कमार लिखा गया उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट, यहाँ शाह लिखा गया उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट, यहाँ जॉनसन लिख दिया गया उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। यानी मिनॉरिटी का प्राइवेट कॉर्पोरेशन में भी अब कुछ नहीं रहा। तो इसलिए आने वाले टाइम से मैं ये भी कहूंगा कि मैं ऐसी पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको शूट करके एक वर्ड यूज करूं कि ये करो, ये मैं नहीं कह सकता, मैं इतना कैपेबल नहीं हूं। लेकिन आप सब समझ रहे हैं, आप जहां जहां भी काम कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर ये चेतना पैदा कीजिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेने के लिए करिए। क्योंकि हमारा कॉन्फ्रेंस का जो थीम था यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट मोबिलिटी, और डेवलपमेंट तभी यूथ की हो सकती है और जब इन चीजों को आप लोग उनको एजुकेट करेंगे। आप एजुकेट कीजिए और इसी हिसाब से वो आगे जाके बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो खत्म होती दिखाई दे रही है और हो भी चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4700 वैकेंसी है, पिछले 4.5 साल में भरी नहीं गई है। मेरी वाइफ खुद प्रोफेसर है, 4 प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, किसी की प्रमोशन नहीं हुई है। ये इनका हाल है। और आने वाले टाइम में अगर हम अपने आप में जागरूक नहीं हुए तो ये हम लोगों को इस ढंग से खत्म करेंगे। रोटी तो हमें खाने देंगे लेकिन इज्जत से नहीं खाने देंगे। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। साथ साथ में आपके साथ ऐसी बातें करता रहूंगा आपकी परमिशन से। नाउ आई वेलकम जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया। लेट अस वेलकम हिम विद ह्यूज अप्लॉज। थैंक यू सो मच। वेलकम। Mr. K.P. Chaudhary, the secretary of this federation, Mr. K.P. Singh, Mr. Balrendra, the ADC Jalandhar, JBD, all the representatives, our powerful representatives from Canada, Arjinder Kumar, Chintan Kumar, Hardesh Thai, USA, Rep Chief Kane from Canada, Sri L.R. Bali, is an author and writer, other very, very distinguished personalities who are here. हिंदी थोड़ा थोड़ा जानता है बट हिंदी में भाषण करना मुश्किल है, पंजाबी जानता नहीं। So I will slowly speak in English. I hope you will be able to understand what. And this 3 days conference is a wonderful conference. I feel you have touched the relevant points. The social justice and the constitution, women empowerment, youth and education. These are all the serious problems being faced by our community. Social justice and the constitution, our great leader, this whole icon, Dr. Ambedkar, gave us the social justice principle elaborated in the constitution. And our friend expressed doubt whether the democracy is in danger. No, it is not in danger. Constitution is not in danger. Democracy is not in danger. You look at the powerful group of people who are sitting here. When we are here, where is the question of or parenting of constitution? We are there to fight against any such onslaught on the constitution. It is with great struggle we got these rights. Probably after some period,
we ourselves will say, we don't require this reservation. But so long as the caste inequality, oppression, atrocities all continue in the society, so long as it continues, we want constitutional protection. We want reservation because we are not getting the equal treatment with others. If you get equal treatment, we don't want any reservation. We will get the right share in the wealth of this country. There is an important provision in the constitution. There should be equitable distribution of the wealth of the country. That has never happened before the constitution because this entire country was ruled by rajas and powerful people, those who served them, those who belong to their group, only the land, wealth, everything was distributed to them. When we have the voice, we came up, then there is nothing left for us. There is no land. There is no food. The equitable wealth of the country had never been distributed equally. If that had happened in ancient India, during the time of these rulers, you also know there are, I don't want to mention, so many states are there in the small place of Punjab and Haryana, Himachal Pradesh. All these rulers were only concerned with their people. They never gave any land to us. Then how can we? Land is the main asset. Main asset is the land. If we get only land, we can survive in this society. We can do cultivation, we can feed our children, nothing happens. Only when the democratic system came, we got the constitutional right. And you must also understand, Ambedkar fought because he is one of the brilliant mind. He got the best education he had in those days. At that time, there was nobody, no Indian there who had acquired that much of education and quality. So Ambedkar could fight against them, plead against them. These are required, these are necessary. That is why, despite all the objections, he could take all these rights, include these rights in the constitution. That will not, I don't think in a fine morning anybody can take away these rights. And you must have heard of the constitution cannot be amended so as to take away the basic structure of the constitution. There are some basic structure for the constitution of India. That cannot be taken. The valuable fundamental rights cannot be taken away. Recently amended, we can amend the fundamental rights. But even then, that fundamental right, by amendment, we cannot change the basic structure. Now, you must have heard the 10% reservation has been given to economically weaker sections of the community. So, in the constitution, socially and educationally backward persons could alone be given reservation under Article 16(4) of the Constitution. Now, they have in 16(5) is also added to the Constitution that economically weaker section. That economically weaker section has been will define later. So that is also included. That is also challenged in the Supreme Court that it is against the basic structure of the Constitution. So there is in every time there will be always a threat to the present system. That is, the society is moving. It is even the Constitution is not a static thing. It's a dynamic thing. You have to interpret the Constitution, give to the changing society. So the democracy also will have a different meaning. So I don't think that the democracy is in peril, the Constitution is peril. Nothing will happen so long as we are militant, we are concerned with our rights.
only thing is that we have to make use of the valuable rights given under the Constitution. That one thing is educate our children. That is the greatest thing we have to do. And Punjab is particularly very good in that compared to many other states. Punjab, they are taking interest in educating their children. That is why the large number of people are in whenever we go to Canada, Australia, or in England, or everywhere, the Punjab community is there. There is a very valuable, wealthy community in every European country is there. That is something very marvelous. It is not happening in any other parts of this country. So they have many of them have come and to see their brethren, their relatives. They come. I asked one of my friends. They come almost every year. It's something very unique. They are not cut the relationship with the country. Some people they become elite and they become wealthy. They forget about their relations. They forget about their dear ones, which once upon a time. But the Punjab maintain that culture also. They come, they meet, and the 3 days conference. This is something which is one day conference or something will happen and discuss the many things. But people are coming in large number, actively participating in such discussion and think of the future, think of their family, think of their children and what to do. That is something very important. And I feel you should continue to take interest in these public affairs, the empowerment of women, education of children, social justice principles. How of course, the government employment is now it is narrowed down. It is little by little the opportunities are not there. Most of the class 4 employees are now contract jobs. So the class 4 employees is practically that source is dried up. The other source is only higher education. Higher education. Higher education. Our children are. One problem is there is no motivation and there is no incentive. The children who take, I don't want to say name of community, but the main community, which is they teach their children how to behave, how to learn, how to read, how to write, come up with education. Such a incentive also should be given and to select the subject, select the job. And this right of employment in private sector, this has been heard right from there was an earlier resolution 1996, from 1996 onwards it started that the opportunity to get public employment in the private sector. It is very difficult because they have invested money. But one important aspect is that those who get any loan, any public fund from the government should ensure that they should follow the principles of reservation, the social justice principles there. And which company in India, which the commercial activity in India is being done without the help of the loan from the banks, public money, the land, without using the public land, without using all subsidies. If you get any sort of help from the government should insist that the social justice principle should be carried out in that particular organization. If they get bank loan, if they get land, if they get any other subsidy or tax rebate or anything, these things, these are all these valuable things of the state. When the state is barging away these rights, they must ensure that, look at the large number of people are in this country without any job. You give a particular, not that. In America,
I don't want to say many of them. No, there cannot be any activities without 30% African origin people. It may be a private, but if you want to do any job, you must ensure that the 30% of the employment should be given to the African origin people. Why? Such a thing could be implemented in India. If you get public money, you look at any hospital in India, how did they get the land? If you get any company or anything, how for 5 years the tax is paid. That means after the production, for next 5 years they are not supposed to give any tax to the public exchequer. If you give such a right to that commercial activity, ask them to ensure the social justice principle. Give them not 30%, at least 10% of the employment they should give. That such a movement we should initiate. We should see that our children should, in whatever employment in this country, which takes away a single pie from single pie of benefit taken from the exchequer, the public fund, they should ensure that the employment also should be commensurate with the inclusive growth of the people. Let it be poor, let it be marginalized sections of the community, that should be ensured by me. So, we very much worry about the greater principles. Whether democracy is in peril or the election is in peril. But we are concerned with our people, the economic development of the people. That we should ensure, and this sort of the meeting, deliberations, and our many important guests, our representatives are in foreign countries. They have also got a greater duty to these the people who are languishing, who are suffering in this country. They must have the helping hand, and they should. In Kerala there was a Christian. Thank you, sir.